एंड वेलकम टू द VMC CUET चैनल। और मैं आपके सामने आ गया हूं विद द टॉपिक ऑफ रीजनिंग, इनफैक्ट द एरिया ऑफ रीजनिंग। नाउ रीजनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फाइनल सिलेक्शन इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जितना इंपॉर्टेंट मैथ्स है, जितना इंपॉर्टेंट इंग्लिश है, उतना ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग है। एंड रीजनिंग की खास बात यह है कि इसका कोई फंडा नहीं है। जैसे मैथ्स में मैंने आपको परसेंटेज की जो मैंने आपको लेसन बताई थी, उसमें कुछ फॉर्मूले थे, कुछ परसेंटेज वैल्यूज निकालने का तरीका था। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। जितना कॉमन सेंस ज़्यादा रहेगा उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो जब मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग कंसिस्ट्स ऑफ बेसिकली टू एरियाज। व्हाट आर दोज टू एरियाज? द टू एरियाज ऑफ रीजनिंग from which questions are commonly asked is verbal and non-verbal. What do we mean by verbal reasoning and non-verbal reasoning? जहां तक verbal reasoning की बात है, verbal मतलब शब्द। तो जब क्वेश्चन में वर्ड्स या नंबर्स दिए रहते हैं और उनके साथ खेला जाता है थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, देन दे कंस्टिट्यूट द वर्बल रीजनिंग। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, वर्बल रीजनिंग की टॉपिक्स होती है सीरीज, जहां पे को नंबर्स की सीरीज दिया रहेगा और आपको अगला टर्म बोलना पड़ेगा। देन देयर इज अ कोडिंग, राइट। कोडिंग मतलब हो गया कि से मेरा नाम दीपक है, दीपक का कोड होगा EJQBL। देन सम नेम से राम का कोड क्या होगा, समथिंग लाइक दिस। बहुत सारे सिचुएशन दैट विल डिस्कस बाय एंड बाय। देन क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशंस, देन डायरेक्शंस, then sitting arrangements, general puzzles, okay, data sufficiency, okay। so data sufficiency की बात करूं, जिसको मैं DS लिखता हूं, so data sufficiency, ऐसी टाइप के टॉपिक्स है। टॉपिक्स आर लिमिटलेस बट वी विल डिस्कस ऑन द सेलेक्टेड एंड वेरी गुड टॉपिक्स जिसमें क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। नॉन वर्बल रीजनिंग की खास बात यह है कि वहां पे शब्द नहीं रहते, सिर्फ फिगर्स रहता है। फिगर्स में ही क्वेश्चन रहता है और फिगर्स भी ऑप्शंस में रहते हैं। तो जैसे मैं इसी क्वेश्चन सीरीज को मैं फिगर्स में कन्वर्ट कर दूं कि एक फिगर में 3 एरोज होंगे, एक फिगर में 5 एरोज होंगे, एक फिगर में 7 एरोज होगा, तो चौथे फिगर में कौन सा एरोज होगा, या कौन सा फिगर इन चारों फिगर से डिसिमिलर है, राइट। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि नॉन वर्बल में भी है, नॉन वर्बल में भी है, राइट। तो माने ब्यूटी ये इस चीज में है कि टॉपिक दोनों भले अलग अलग टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जो होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे वर्ड्स या नंबर्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिगर्स रहते हैं, राइट। सो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स बाय एंड बाय। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑफ वर्बल रीजनिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सीरीज कंप्लीशन टेस्ट। So what do we mean by series? आप मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे सीरीज नंबर्स की प्रोग्रेशन क्या है आपको खुद पता नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें और अच्छे बन जाएंगे। ओके, तो सीरीज में जैसे मैं बात करूँ सिंपल सीरीज की मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो 1 हो गया, 4 हो गया, देन 9 हो गया, देन 16 हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? ओके, तो यू आर सीइंग, यू कैन से कि ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया, देन इट विल बी 25। दूसरी तरह का क्वेश्चन हो गया कि 1, 4, 10, 16, 25, विच इज द रॉन्ग टर्म? यू विल से सर 10 इज द रॉन्ग टर्म। सो व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ सीरीज जो कि पूछी जाती है इन सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस? टाइप्स ऑफ सीरीज। The first type of series is the number series. तो number series मतलब ये हो गया कि the series will be entirely based on numbers only. जैसे कि 1, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया 1, 4, 7, 10. What is the next term? You will say next term is 13. So this is entirely number based. That's why it is known as a number series. Then comes the letter series. A, C, E, right, G. Okay, then what is the next term? You will say, sir, next term is I, because it is jumping by 2 places. This constitutes the letter series. And the third kind of series is basically the alphanumeric series. If it says A1, C4, E7, G10,
Then what is the next term? You will say, sir, the next term is I13 because it consists of a combination of alphabets as well as numbers. So that constitutes the alphanumeric series. So our lecture will be, first 3 parts will be entirely on number series because उसकी weightage बहुत ज़्यादा होती है in all kinds of competitive examinations. So what is number series all about? You all know that. Now what are the types of questions जो number series में पूछा जाता है? The first kind of question is basically the last term. So when I say 1, 4, 7, 10, 13, then what will you say? The last term is 16. So this will be the option missing term, and then you have to tell me which is the, from the options again you have to select the right term. Okay. Then missing term is a series is given 1, 4, 7, 10 and this will be missing, and then 13 and 16 and 19, and then you have to tell what will term come here. So series is given, the middle term is missing. Okay. So you have to tell the which is the term which is missing over here. Then wrong term. Wrong term means 1, 4, 7, 9, 13. Okay. Then we can say 17, 19. There can be 2 kinds of questions in wrong terms. First kind of question is, which is the wrong term? So obviously there are 2 terms which are wrong here, 9 and 19. Okay, 9 and 17, sorry. So the options will be that how many wrong terms are present in the series? 1, 2, more than 2, and the series is correct. So the 4 options will be 1, second option is 2, third option is more than 2, and fourth option is the series is correct, no terms wrong. And the second kind of question in the wrong term is, which is the wrong term? So 1, 4, 7, 10 मैंने कह दिया, और कोई एक term जो गलत है आपको बताना है which is the wrong term. So these are the 3 kinds of questions within a series. Okay. So now different kinds of series which we will discuss through my various sub lectures. Number series में, which the first kind of series is sum or difference series, that we'll discuss by and by. So just go through these. The first kind of series is sum or difference series, or slash and difference series, that also I'll tell you. Then comes the power series. Powers means square, cubes, fourth power, these constitute the power series. Mixed operations means when the series consists of plus, minus, division, multiplication, combination of all the operations, they constitute the mixed operation series. Then constitutes a digit series. Digit कोई pattern में है, then it constitutes a digit series. Then the fifth kind of series is series within series. एक ही series में 3-4 किस्म की series होंगी, तो आपको figure out करना है कि उससे next term कौन सी होगी. And miscellaneous series, which is a combination of all these 5 things. And this, you believe me, is the toughest kind of questions जो पूछी जाती है within the miscellaneous series. That also we are going to discuss. Okay. So let's pick up the series one by one. The first series is sum or and difference series. Now what do we mean by sum or and difference series? और and में फर्क क्या है? एक सीरीज में और भी हो सकती है और एक ही सीरीज में सम एंड डिफरेंस हो सकती है, जैसे कि 1, 4, 7, 10. So you will say, sir, it is increasing by 3 and hence the next term is 13. But there can be a series जहां पे प्लस भी हो रही है माइनस भी हो रही है. So 1, then plus 3 is 4, then minus 2. Plus 3 minus 2. Okay, then plus 3 which is 5 and then minus 2 which is 3. So we can say this is a kind of series within series as well, but there are 2 operations involved, plus as well as minus. They constitute the sum and difference series. इसीलिए हमने यहाँ पे और and के बीच में एक slash देके रखा हुआ है. Okay, so let's discuss some of the questions of sum or difference series. Very simple question, just to give you a feel, जिससे आपको थोड़ी सी अच्छा भी लगे. पहला क्वेश्चन हो जाएगा. सो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म. वेरी इजी, इट इज 64, 58, 52 एंड 56. इट इज प्योरली अ डिफरेंट सीरीज. यू विल से सर द नेक्स्ट टर्म इज सब्सट्रैक्टेड बाय 6, hence the next term is 46 minus 6 is 40.
right? So by the way, if you have not subscribed to our channel, please subscribe our channel and hit the like button and press the bell icon so that you will get subscription for all the subsequent videos. Okay, so this is a very easy question. अब इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज. सो इट इज 64, 70, 77 एंड 85. सो यहां से कितना बढ़ रहा है? इट इज इंक्रीजिंग बाय 6, then it is increasing by 7, then increasing by 8. So now it will increase by 9. So 85 plus 9 is 94. So the term in this series is 94. Okay, let's move on to the next question now. Now this is creating a little bit of trouble here. So what is the next number in the series? 64, 69, 58, 64, 54. So I'll write the terms properly. घबराना नहीं है. सबसे पहले 64, 69, 58, 64, then 54, then what? तो 64 से 69 हो रहा है +5, then it is -11, then +6, then it is -10. So now I am getting the field over here. +5 -11 +6 -10. So it will be +7 and then it will be -9. So I am concerned only with this term. So 54 plus 7 is 61 and hence the next term in this series is 61. Okay. What do we mean by power series? जैसे कि मैंने आपसे कहा, power series means the series will be given in powers. Okay, like I give you a very simple series like 1 square, then 2 square, then 3 square, then 4 square, something like this it will be given, and then you will be required to find the series. It can be possible 1 square, then 2 cube, then 3 square, then 4 cube. This is the meaning that you will decipher by seeing the question. I'm writing the question in decoded form, but the question will be given in raw format. आपको जितना प्रैक्टिस करोगे ऑफ क्रैकिंग द सीरीज उतनी ही आप और प्रोफिशिएंट बनोगे. तो यहां पे मैंने पावर सीरीज में सिर्फ एक क्वेश्चन डाली है. प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज? विच इज द रॉन्ग टर्म? सो द सीरीज दैट यू आर सीइंग इज 1, 8, 9, 16, 25, 216, 49. तो आप देखो यहां पे क्या हो रहा है ना, प्लस माइनस की तो कोई चक्कर ही नहीं है यहां पे, राइट? क्योंकि यहां पे +7 हो रहा है और +1 हो रहा है, +7 हो रहा है, +9 हो रहा है, राइट? बट इफ यू केयरफुली नोटिस 1, 8, 9, 16, so it is 1 square, then 2 cube, then 3 square, then technically here it will be 4 cube, but here it is given 4 square. After that it is 5 square, then 6 cube, then 7 square, which means 4 cube could have been there, should have been here, but yahan pe hai 4 square 16, which means the wrong term in this series is 16. Right? This can also be done by sum and difference method. I want to know from the comment section how you can do this question by sum and difference method. I am waiting for your comments. So this concludes the first part of our series. We'll have some more good questions on series and some more types of series in my next and subsequent lectures. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये वीडियो देखी. Thank you so much and until we meet in the next class, happy learning. Thank you so much.